बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ये ख़त्म होने के बाद आपका फार्मास्यूटिक्स वाला सेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो जीडीसी का जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम एट योर फिंगर टिप जो होता है, उसका फार्मास्यूटिक्स वाला पोर्शन टोटली एमसीक्यू जो भी था वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक मतलब आप 50 एमसीक्यू मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है, 50 एमसीक्यू अगर आज कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो लगभग और 50 एमसीक्यू है। Which of the following does not qualify as a drug's physicochemical component that can influence renal excretion? Molecular size, pK of the drug, lipid solubility, disintegration rate. सो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? Which of the following does not qualify as a drug's फिजिको केमिकल कंपोनेंट। ड्रग का जो फिजिको केमिकल कंपोनेंट होता है, इनमें से कौन क्वालिफाई नहीं करता है? दैट कैन इन्फ्लुएंस रेनल एक्सक्रीशन, जो कि रेनल एक्सक्रीशन को इन्फ्लुएंस कर सके। तो कौन होगा? डिसइंटीग्रेशन रेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई, इनमें से कौन क्वालिफाई नहीं करता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई आज ड्रग्स फिजिको केमिकल कंपोनेंट। ड्रग का फिजिको केमिकल कंपोनेंट ये डिसइंटीग्रेशन रेट। बाकी सब देखो, लिपिड सॉल्युबिलिटी, पीके ऑफ द ड्रग, मॉलिक्यूलर साइज, दीज आर द फिजिको केमिकल कंपोनेंट, मतलब ड्रग का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन रेट कभी नहीं होगा। An isotonic solution is one which has a freezing point less than that of a plasma, has same salt composition of a plasma, does not cause crenulation, does not cause hemolysis. So an isotonic solution is one which has same salt composition of a plasma. Okay. Interdose interval depend on age of the patient, bioavailability, half-life of the drug, dose of the drug. Interdose interval depend upon half-life of the drug. How many times an oral solid dose can be given in 24-hour time? How many times an oral solid dose? How many times an oral solid dose can be given in 24 hour? That is 3 to 4 time. ठीक है, how many times an oral solid dose can be given in 24 hour? That is 3 to 4 time. Two drugs are said to be pharmaceutical equivalent if their two drugs are said to be pharmaceutical equivalent if they are identical in dosage form but can differ in strength and route of administration. Identical in strength and dosage form but can differ in route of administration. Identical in dosage form and route of administration but can differ in strength. Identical in strength, dosage form and route of administration. क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टू ड्रग आर सेड टू बी फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट। दो ड्रग को हम फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट कहेंगे इफ दे आर आइडेंटिकल इन स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ में आइडेंटिकल होगा, डोसेज फॉर्म में होगा एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, तब जा करके हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। If two or more dosage form of same drug contain same labeled quantities of the drug, they are therapeutic equivalent, chemical equivalent, clinical equivalent, none of these. So correct answer होगा option number B. If two or more dosage form of same drug, if two or more dosage form of same drug contain same labeled quantities of the drug, they are chemical equivalent. ठीक है, निपाक a program
meant for standardized pharmacokinetic analysis is not used to obtain area under curve, biliary concentration, peak plasma concentration, peak plasma time. सो करेक्ट आंसर होगा एरिया अंडर कर्व। ठीक है। ड्रग हैविंग पीके वैल्यू ग्रेटर देन 8.0 वो क्या हो जाएगा? ऑन आयोनाइज्ड एट ऑल पीएच, ऑन आयोनाइज्ड इन स्टोमक पीएच ओनली, आयोनाइज्ड एट ऑल पीएच, आयोनाइज्ड इन स्टोमक पीएच ओनली। सो ड्रग हैविंग पीके वैल्यू ग्रेटर देन जिसका 8.0 आएगा वो ऑन आयोनाइज्ड एट ऑल पीएच। What level of creatinine clearance represent moderate renal failure? Less than 10 ml per minute, 120 से लेकर के 130 ml पर मिनट, 20 से लेकर के 50 ml पर मिनट, 70 से लेकर के 80 ml पर मिनट। What level of creatinine clearance represent मॉडरेट रेनल फेल्योर? मतलब क्रिएटिनाइन क्लियरेंस का क्या लेवल होना चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करेगा मॉडरेट रेनल फेल्योर? अगर 20 से लेकर के 50 ml पर मिनट रह जाएगा तो यह मॉडरेट रेनल फेल्योर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। What does the BCS stands for? Basic Classification System, Biopharmaceutical Classification System, Biological Classification System, Binomial Classification System. What does the BCS stands for? That is Biopharmaceutical Classification System. BCS Biopharmaceutical Classification System बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। सिग्मा माइनस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट, absorption rate constant, metabolic rate constant. Sigma minus method is used to determine elimination rate constant. So ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। In high concentration of electrolyte, electrolyte tends to destabilize a lyophilic sol. This process will be known as salting out, destabilization, stabilization, restabilization. So correct answer हो जाएगा ऑप्शन ए 2 की salting out. Drab test is associated with measuring the efficiency of detergent, wetting agent, suspending agent, absorbent. Drab test is associated with measuring the efficiency of wetting agent. Option number B आपका सही आंसर। In the formulation to facilitate the wetting of insoluble solid, which of the following agent is used? Suspending agent, flavoring agent, wetting agent, none of the above. So in the formulation, to facilitate the wetting of insoluble solid, which of the following agent is used? Wetting agent. Option number C आपका सही आंसर। Which of the following emulsifier has the highest HLB value? PEG 400, cetrimide, sodium lauryl sulfate, span 80. So which of the following emulsifier has the highest HLB value? That is sodium lauryl sulfate. Fusogen used in hybridoma of monoclonal antibody. Polyethylene glycol, SDS, 2in40, 2in80. So correct answer हो जाएगा polyethylene glycol. Option number A. How surfactant will facilitate or aid wetting of hydrophobic materials in liquid? By decreasing the solid liquid interfacial tension, by increasing the solid liquid interfacial tension, by decreasing the solid liquid interfacial tension, or and by increasing the solid liquid interfacial tension, none of these. How surfactant will facilitate or aid wetting of the hydrophobic material in liquid? That is by decreasing the solid liquid interfacial tension. Okay. Chemical kinetics. Which of the following plot would be most helpful in deciding shelf life at a predator predetermined temperature? Which of the following plots
would be most helpful in deciding shelf life at a predetermined temperature. भाई यहाँ पर तो कोई प्लॉट नहीं है. ओके. Remaining on degraded V oblique S time, log remaining on degraded V oblique S time, log rate V oblique S, log absolute temperature, log rate V oblique S इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉग रेट V oblique S इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर फास्ट ऑर्डर reaction is T half is equal to A by 2K, T half is equal to 0.693 by K, T half is equal to 1 by 2 A Q K, T half is equal to 1 divided by AK. So half life equation for first order reaction is T half is equal to 0.693 K by K. ओके. सो ऑप्शन बी आपका सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 49. द ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ग्राउंड लेवल पोजेसेस डैश एनर्जी टॉकिंग ग्राउंड लेवल आज जीरो पोटेंशियल, दैट इज काइनेटिक, पोटेंशियल, फ्रिक्शनल, ग्रेविटेशनल. सो द ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ग्राउंड लेवल पोजेसेस डैश एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 50. How many half-lives is required to disintegrate 90% of the drug? 3, 3, 4, 1, 2. So how many half-lives is required to disintegrate 90% of the drug? That is 4. 4 half-life चाहिए 90% of the drug को disintegrate होने के लिए. So ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर. अरे ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्या? ओके ओके, मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं किया. 85 के बाद 87 पढ़ा दिया, 86. ओके ठीक है, ये दोनों 85, 86, 87 ख़त्म हो गया ना. 88, 89, 90. ओके. So 85, 87, 86, 85, 86, 87 तीनों खत्म हो चुका है ना. 88. ओके. The term bioavailability refers to relationship between the physical and chemical properties of the drug and its systemic absorption, movement of a drug into the body tissue over time, dissolution of a drug in the gastrointestinal tract, measurement of the rate and amount of a therapeutically active drug that reaches systemic circulation. The term bioavailability refers to measurement of rate and amount of therapeutically active drug that reaches the systemic circulation. Okay, so option number D आपका सही. Capacity limited process can be described by linear kinetics, Michaelis-Menten kinetics, non-linear kinetics, mixed kinetics. So capacity limited process can be described by non-linear kinetics. So option number B आपका सही आंसर है. Which of the following is categorized as having intermediate risk potential with reference to bioequivalence study? Griseofulvin, quinidine, phenytoin, ephedrine. Which of the following is categorized as having intermediate risk potential with reference to bioequivalence study? That is option number A, griseofulvin. Lipid bilayer structure that encloses an internal aqueous volume. Neosomes, solid lipid nanoparticles, nanoparticle liposomes. So lipid bilayer structure that encloses an internal aqueous volume क्या होता है? Liposomes.
ऑप्शन डी आपका सही आंसर। द टू रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स in the absorption of a drug from orally administered formulation are disintegration and disaggregation, dissolution and disintegration, dissolution and permeation across the biomembrane, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन एंड परमिएशन अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि डिसोल्यूशन एंड परमिएशन अक्रॉस द biomembrane. There are mainly three parts of a bioavailability study submission, that is protocol data and results. Which element is not the part of the protocol? Case report, study of objective, ethical consideration, study designing. So correct answer हो जाएगा case report, case report. Which route of drug administration is most likely to lead the fast part effect? Sublingual, oral, intravenous, intramuscular. Which route of drug administration is most likely to lead the fast part effect? That is oral. Option B सही. Bioavailability is maximum in dash injection, subcutaneous, intravenous, IM, intradermal. That is intravenous. The excretion ratio is determined by comparing the clearance value of the drug, which compound glucose, urea, albumin, creatinine. So correct answer creatinine. Elimination after 3 half-life in fast order kinetic is 12.5%, 75%, 87.5%, 94%. Okay. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.5%। एलिमिनेशन आफ्टर 3 हाफ लाइफ इन फास्ट ऑर्डर काइनेटिक, जो कि 12.5% होता है। रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड इन सॉल्यूशन, टैबलेट, कंट्रोल्ड रिलीज प्रोडक्ट, हार्ड जिलेटिन, कैप्सूल। रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड इन सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन ए सही। नॉइज व्हिटनी इक्वेशन इज रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक, फास्ट ऑर्डर काइनेटिक, pharmacodynamic, dissolution. That is dissolution. Drug which are having high solubility and low permeability are called as class 2 drug, class 4 drug, class 1 drug, class triple I drug. So class triple I drug होची correct answer. Which of the following is a factor that affect the drug distribution? Drug stability, disintegration time, plasma protein binding, डिसोल्यूशन टाइम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर, इनमें से कौन एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को? ड्रग स्टेबिलिटी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को एज ए फैक्टर के रूप में अफेक्ट करता है। कौन अफेक्ट करता है? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। सो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर फ्रॉम प्लाज्मा कंसेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडी गिव्स इंडिकेशन ऑफ द रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? सी मैक्स, टी मैक्स, AUC, टी हाफ। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा टी मैक्स। If C is the concentration of the dissolved drug and CS is the saturation concentration, in which case the sink condition are said to be maintained? C less than 20% of the CS, C greater than 20% of the CS, C less than 10% of the CS, C greater than 10% of the CS. So if C is the concentration of the dissolved drug and CS is the saturation concentration, in which case the sink condition are said to be maintained. को इनमें से कौन सा कंडीशन में सिंक कंडीशन आपका मेंटेन होता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि C लेस दैन 10% ऑफ CS, दैट इज सैचुरेशन कंसेंट्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28. The characteristic of a non-linear pharmacokinetic include नहीं आउट है तेल पुणी पकेबी
মেডিসিনটা এখন 500 টাকা দাম, সরিষ তেলে দেখি এরা আছে। The characteristic of a non-linear pharmacokinetic include area under the curve is proportional to the dose, elimination half-life remains constant, area under the curve is not proportional to the dose, amount of the drug excreted through remains constant. ठीक है. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? एरिया अंडर कर्व इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज, डोज के साथ प्रोपोर्शनल नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 29. द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दैट डिस्क्राइब द एफिशिएंसी of elimination of a drug from the body's half-life, clearance, excretion, metabolism. The pharmacokinetic parameter that describe efficiency of elimination of a drug from the body is known as clearance. So option number B आपका सही आंसर. Drug which are having high solubility and low permeability are called as class 2 drug, class 1 drug, class triple I drug, class 4 drug. So drug which are having high solubility, ऐसा ड्रग जिसके पास हाई सॉल्युबिलिटी होता है, लो परमिएबिलिटी होता है, वो क्लास 3 ड्रग होता है, क्लास ट्रिपल आई. ओके. द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD relates single to a daily dose of an administered drug, an administered dose to a body weight, an on-charge drug reaching the systemic circulation, the amount of a drug in the body to the concentration of a drug in plasma. So वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके साथ रिलेट करता है? द अमाउंट ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी टू द कंसेंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन द प्लाज्मा, इसको VD कहते हैं. ओके. ऑप्शन डी आपका सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज अचीव्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, active transport, active diffusion, passive diffusion. So maximum absorption of the drug in gastrointestinal tract is achieved by passive diffusion. किस तरीके से होगा? passive diffusion से होगा. Which, question number 33, which promotes the excretion of a acidic drug? Which promote the excretion of acidic drug? Citrates, मेथियोनाइन, ascorbic acid, ammonium chloride. Which promote the excretion of acidic drug? करेक्ट आंसर हो जाएगा साइट्रेट. ठीक है. The process of transport across a cell in a particulate form by formation of a vesicle is called as active transport, pinocytosis, facilitated diffusion, passive diffusion. So correct answer हो जाएगा pinocytosis. Fraction of administered dose which may be an form of an ester of salt of active drug is termed as activity factor, intrinsic factor, formulation factor, salt factor. So correct answer हो जाएगा salt factor. Okay. Question number 80, 89, 90. Okay. फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा. फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी. ओके. सो प्लाज्मिड इज ए मैक्रोमोलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, सर्कुलर पीस ऑफ डुप्लेक्स DNA, a hybrid DNA that is formed by joining piece of DNA, endogenous substance secreted by one type of cell. So plasmid क्या होता है? Plasmid generally circular piece of a duplex DNA. Correct answer option B. Okay. Question number 2. Which of the following is a technique used for the specific identification of RNA molecule? That is Western blotting, Northern blotting,
dot blotting, southern blotting. Which of the following is a technique used for the specific identification of a RNA molecule? That is northern blotting. Okay, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. Drug obtained by recombinant DNA technology, tetanus toxoid, penicillin, human insulin, zidovudin. So correct answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि human insulin हो जाएगा. Question number 4. Who introduced the mutation theory? Von Baer, Camillo Golgi, Hugo de Vries, Edward Jenner. So who introduced mutation theory? Hugo de Vries. What is genetic code? What is genetic code? It is a set of rules to determine how much a nucleotide sequence is converted into amino acid sequence of a protein. It is a set of rules to determine the segment of DNA that code for functional product. It is a set of rules to determine the structure containing DNA that carry hereditary information. It is a set of rules to determine the complete base sequence of a bacterial chromosome. So what is genetic code? It is a set of rules to determine how a nucleotide sequence is converted into amino acid sequence of a protein. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर. साउथर्न ब्लॉट इज यूज्ड फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन probe for hybridization of a DNA molecule, hybridization of a RNA molecule, hybridization of a protein molecule, hybridization of a glycoside molecule. So southern blot is used for sequencing of a nucleotide in a probe for hybridization of a DNA molecule. ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर. Restriction endonuclease is used in recombinant DNA technology in reaction टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप, अरे ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया. ओके, कोई बात नहीं, टाइप 2 है. प्रोफेज जनरेशन इन डीएनए लाइगेज, T4 बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई. सो प्रोफेज generation in DNA ligase is T4 bacteriophage. ऑप्शन ए सही. Question number 9. Plasmid are virus, new type of microorganism, extra chromosomal genetic element of a bacteria, none of these. So plasmid को क्या बोलते हैं? Extra chromosomal genetic element of a bacteria. Okay. Hairy root culture for secondary metabolite production are induced by transforming plant cell with virus, bacillus thuringiensis, agrobacterium tumefaciens, agrobacterium rhizogens. ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस. ऑप्शन नंबर डी आपका सही है. सो विथ दिस आपका फार्मास्यूटिक्स वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद इसका सेशन आता है. तो आज के लिए इतना ही. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक्स फॉर watching.